Hi friends, welcome to this class. I'm Navpreet Kaur. As you all know, and many of you who've been attending my classes, they all know me. In this today's lesson, I will be giving you 5 top tips for scoring 7 bands in IELTS speaking module. So let's crack it. Let's crack the speaking module. Those who've been attending my classes, they are familiar that my name is Navpreet Kaur. I'll wait for a few students to join before I begin this class. Then we'll start with this class. Right? How are you all? Those who've joined? So friends, I was just waiting for the people to join. And before that, I'll just like to give a brief introduction of myself. My name is Navpreet Kaur. I'm an IELTS trainer at an IELTS institute in Amritsar. I have been teaching offline students since last 3 years. I have a total work experience of 20 plus years in corporate sectors, and during these years I have taught I have worked on different profiles, and I have earned a lot of experience, and I've been able to attend various classes, and I've learned a lot during these periods. My qualification is MBA. I myself have scored 7.5 bands in the IELTS examination, and maybe in the future I'm just planning to improve on these scores. And as you all know that I'm an IELTS trainer at an institute, I've taught hundreds of students offline and helped them score 7 plus bands in their IELTS examinations. So if you also want to score 7 plus bands, please do subscribe to my courses on the Unacademy. There are various courses which I have published on Unacademy. You can just search them. If you go to my profile, you will see that there are various upcoming courses also, and the courses which I have already given. So you can subscribe to these courses, and that will help you to get your desired bands in your IELTS examination. I recently joined Unacademy as an educator of IELTS, and my referral code here is mentioned NCOR. My referral code at Unacademy is NCOR. You can use this code to subscribe to the courses, and that will give you a benefit of 10%. You'll get a 10% discount on your course fee if you use my referral code at the Unacademy Plus classes. That will save 10% of your course fee. Apart from that, I have a Telegram channel with the name IELTS with NCOR. You can note down this channel, and in case you want to contact me directly, you can just send any of these details, or if you want to send your readings or writings, anything online, you can send the writings here. I'll check them and give you the feedback regarding that. Right? Hi Sonu, how are you? Right? And if you want to search my profile at the Unacademy platform, the link given here is, and you can search by this. You can see my profile at the Unacademy platform, and at the same time you can see what courses I have already taken and what I'm planning to take in the future. Right? And since Unacademy is one of the best platforms that I've ever seen, that is an online platform where we have all the live classes. All the classes are given live, and the courses are very structured.
there is a certain parameters given to us by Unacademy which we have to follow and take the classes. We have to plan our classes according to those structures. So joining Unacademy, the online courses or Unacademy would be beneficial for you, as they'll help you to take structured courses, and at the same time live classes would be there, and the lessons given there would be by the top educators. All the top educators are there who can give you the different lessons. If you enroll with the courses, suppose you enroll with any of the course using my referral code NCOR, that will not only give you an access to the courses which I give, but it will also give you an access to the courses of other educators as well. So you can imagine that you will have a variety of courses to learn from and a variety of classes to attend to. Because if we join some institute, or if we join anywhere online, where we learn only from one or two learners. But if you here in Unacademy, if you join these courses, you'll learn from different educators. One would be that if you join my class, you would definitely get to attend these classes, but at the same time you will get a chance to attend the classes of other educators also. And there are hundreds of educators on Unacademy, so you can learn any of these lessons, any of these courses over there, right? That will be a beneficial for you, that will be a win-win situation for you, because it will not only save your money, it will save 10% discount on your course fee, but at the same time it will give you an access to the classes of other educators as well, right? So it's very beneficial that you join the live classes of Unacademy online courses here. Apart from that, we have weekly quizzes and doubt clearing sessions, because every fourth session is a doubt clearing session, and when we conduct 3 sessions in a particular course, every fourth session is a doubt clearing in which you can clear your doubts. अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो you can definitely ask in that doubt clearing session, right? तो यहाँ पे मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ऑनलाइन पे क्लासेस हैं, दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड. अनअकैडमी पे जो क्लासेस हम बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्लासेस ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, या फिर ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लेते हो कहीं पर, उसके कंपैरेटिवली ये क्लासेस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हैं और बहुत ही वेल प्लान्ड हैं. यू विल लर्न अ लॉट इफ़ यू जॉइन दीज क्लासेस हियर. एंड लेसन्स जो दिए जाते हैं बहुत सारे एजुकेटर्स से दिए जाते हैं. अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो मेरा रेफरल कोड लेके, सपोज NCOR से आपने सब्सक्राइब किया कोई कोर्स, आपको मेरे कोर्स पे तो एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. मेरा कोर्स आप अटेंड कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास और भी एजुकेटर्स होंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो. That is one of the major benefits that you will be getting, apart from saving 10% money on your course fee, right? And if I tell you about the course fee, this is very nominal as compared to the other online platforms or offline platforms as well. Because यहाँ पे फीस कितनी है, that is अगर आप 6 months का कोर्स लेते हो, तो what is the fee? 10,900 for a 6 month package. जो नॉमिनल बाकी जगह पे अगर आप नॉर्मली जाओ तो दैट इज़ अ कोर्स फी ऑफ 1 month ओनली. यहाँ पे आप 6 months का लेते हो, और उस पर भी इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड एज NCOR, आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा. दैट मीन्स 1,090 रुपीज़ आप अगेन सेव कर पाओगे, विच मीन्स बहुत ही नॉमिनल ये फीस बन जाती है. एंड इट इज़ वेरी ईजी. आप लोग इजीली इसको अफोर्ड कर पाओगे. यू कैन ईजिली अफोर्ड दीज फी. और पैकेजेस भी डिफरेंट हैं. जैसे 6 months का पैकेज है, जिनके पास अभी टाइम है बहुत, सपोज दे हैव 6 months अभी फॉर अटेंडिंग द क्लास, तो दे कैन ईजिली टेक दिस पैकेज. उसके अलावा देर आर 12 months पैकेज ऑल्सो, देन 24 months ऑल्सो, देन 1 month भी है. इन केस किसी को बहुत जल्दी है तो ही कैन टेक अ 1 month पैकेज ऑल्सो, जो 2799 में है. एंड अगेन यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस. और 3 month पैकेज है जो 16,900.
क्या जो आइडली 2300 पर मंथ बनेगा, बट इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड you can again get a discount of 10% on this, right? अगर आप 10% डिस्काउंट इस पर भी सेव करते हो तो 690 रुपीज़ आपके इसमें सेव हो गए. दिस फीस इज़ वेरी वेरी नॉमिनल इफ़ यू कंपेयर विद द अदर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, राइट? सो दिस इज़ वेरी नॉमिनल. यू कैन ईजिली सब्सक्राइब टू दीज कोर्सेज और इसमें आपको इतने सारे एजुकेटर से लर्न करने का मौका भी मिलेगा. So this is a best platform which I recommend, right? I would just like to tell you about my upcoming course which is today itself. आज 6 बजे से स्टार्ट होना है कोर्स. दैट इज़ इन द टास्क 2. टास्क 2, the name of the course is Course on Strategy for Attempting Task 2 Questions. और इसमें हम डेली we'll be attempting one type of the questions because task 2 में essay as you all know उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है राइटिंग में एज़ कम्पेयर टू द टास्क 1. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ओपिनियन हो गए, डिस्कशन क्वेश्चंस हो गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए. तो डेली बेस पे वील बी हैंडलिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस. उसको हैंडल करेंगे. उसमें कोई क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं आपको तो यू कैन क्लियर. एट द सेम टाइम वील बी डिस्कसिंग अ बैंड 9 essay इन दैट. और फिर हम ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि उसको बैंड 9 कैसे मिले, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स विद दैट. सो इफ़ यू वांट टू लर्न द राइटिंग, if you want to score band 9 in writing also, you can subscribe to this course as well. And so you can subscribe now itself so that आप इवनिंग में 6 बजे जो क्लास मेरी स्टार्ट होनी है, you will be able to attend that class on the plus courses. Right friends? So this was just about my courses. So without wasting much time, I think I should start with the class. And because बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे होंगे कि मैम फटाफट से बताएं कि what are the tips for the speaking. स्पीकिंग में भी लोग बहुत सारे जो इनको प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ अगेन द डिटेल की जैसे हमारा फर्स्ट एसे है जो आज स्टार्ट होना, दैट इज़ अटेम्प्टिंग ओपिनियन टाइप एसे, एग्री डिसएग्री वाला एसे हमने आज डिस्कस करना है इसमें. दिस इज़, अब इसमें स्पेस कम था, आई हैव जस्ट टेकन जस्ट वन एसे. इसके अलावा वी विल बी अटेम्प्टिंग ईच एंड एवरी एसे ऑन द डेली बेसिस, राइट? सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस. और अगर आप चाहते हो तो आप अभी सब्सक्राइब करो सो दैट ये कोर्स जो 9th से लेकर 16th तक चलेगा, यू कैन अटेंड दिस कोर्स एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस. बिकॉज आपको राइटिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम्स आर देयर, और आप इजीली बैंड, उसमें जितने ज़्यादा बैंड्स आप ले सकते हो आप ले सकते हो उसमें, बिकॉज वील बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन दैट, राइट? Okay, now we'll start with the tips. So what is the first tip? What the first tip which I use, and it is these tips which I am giving are the proven IELTS speaking tips. The first tip is that be aware of the timing and the scoring. आपको पता होना चाहिए कि स्पीकिंग में कौन से क्वेश्चन टाइप में कितना टाइम लगेगा और उसका स्कोरिंग कैसे होता है. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट जो आपको पता होना चाहिए. उसमें व्हाट इज़ देयर दैट IELTS स्पीकिंग एग्ज़ाम हैज़ 3 पार्ट्स. आई थिंक अगर जो थोड़ा बहुत अवेयर हैं IELTS से उनको तो पता होगा, लेकिन फॉर दोज हु आर न्यू आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट IELTS स्पीकिंग हैज़ 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज़ द इंट्रोडक्टरी सेशन, द सेकेंड वन इज़ द क्यू कार्ड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ लॉन्ग टर्म, एंड द थर्ड इज़ डिस्कशन राउंड. सबकी वेटेज इक्वल है, सब में आपको इक्वली एनालाइज करते हैं एग्जामिनर्स. आपने किस में कितना बोला, क्या बोला, उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करेंगे. एवरी सेक्शन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. अब इसमें हम आपको मैं टाइम बता देती हूँ. इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो है उसमें जनरली दे आस्क 5-6 क्वेश्चंस ऑन द जनरल टॉपिक लाइक आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, या आपकी स्टडीज़ और वर्क और एनीथिंग ऑफ द जनरल इंटरेस्ट. जैसे आपके फ्रेंड्स या घूमने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे.
एंड दिस लास्ट्स बिटवीन 4 to 5 minutes. ये 4-5 मिनट का होता है बस. दे विल बी आस्किंग 5-6 क्वेश्चंस इन दिस. एंड ये बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने आंसर्स भी वैसे ही देने हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. द मेन टिप्स इन दिस section that I'd like to give is that you can use this part to develop your fluency and confidence. Fluency and confidence means आप एक रेपो बना सकते हो एग्जामिनर के साथ इसमें, बिकॉज इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाई डू यू लाइक दैट, या फिर दे कैन आस्क यू डू यू लाइक टू सी मूवीज और विच इज़ योर फेवरेट बुक, डू यू लाइक टू रीड और समथिंग, एनीथिंग, कुछ जो एक टॉपिक लेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेंगे आपको एंड वेरी सिंपल आंसर्स. तो आपको एक जस्ट आप खुल के बोल पाओगे, आपका जो वो हेजिटेशन है वो रिड्यूस होती है इस सेक्शन में. यू जस्ट मेंटेन अ लिंक, अ कनेक्शन विद द एग्जामिनर. अब यहाँ पे यू डोंट हैव टू गिव द आंसर्स फॉर टू लॉन्ग. आंसर्स तो देने हैं लेकिन बहुत लंबे आंसर्स नहीं देने. जनरली व्हाट आई रिकमेंड दैट 2-3 लाइन्स में आंसर दो एंड स्पेसिफिक, जो क्वेश्चन है उसके स्पेसिफिक, बट लेकिन एक लाइन और एक वर्ड में नहीं बोलना, एटलीस्ट 2-3 लाइन्स में आंसर दो इसमें. बिकॉज जो लॉन्ग आंसर्स हैं दैट इज़ फॉर ओनली पार्ट 3. जो डिस्कशन क्वेश्चन है उसमें हमने लॉन्ग आंसर्स देने हैं, नॉट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. और ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती. बस रिसेंटली अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने कहीं से और भी पढ़ा होगा. शी डिडंट नो कि इन दोनों में डिफरेंस है. आइल्स इंट्रोडक्शन पार्ट और उसमें आंसर्स देने में डिफरेंस है. आई जस्ट गाइडेड हर और उसके ईजिली उसमें 7 बैंड्स आ गए इन द स्पीकिंग. ऑल्दो शी वॉजंट वेरी गुड in English, उसकी grammatical errors थी, but still using these tips she got 7 bands. So इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस और ये टिप्स को आप ध्यान से सुनो बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद पार्ट 2 आ गया. पार्ट 2 इज द क्यू कार्ड. दैट मीन्स दैट यू हैव टू स्पीक ऑन ए टॉपिक विच इज़ गिवन बाय द एग्जामिनर. उसमें आपको 1 मिनट मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए एंड यू विल हैव टू स्पीक फॉर 2 minutes. 2 minutes मिलेंगे आपको बोलने के लिए, बट उससे पहले दे विल गिव यू 1 minute टू प्रिपेयर ऑन दोज क्यू कार्ड. उसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो और उसको इलेबोरेट करके वो 2 मिनट में आप बोल सकते हो. इट कैन बी ट्रिकी फॉर मैनी स्टूडेंट्स. कई लोग लेंथ मतलब स्पीकिंग एट लेंथ नहीं कर पाते, 2 मिनट लगातार नहीं बोल पाते, बोलते हैं करेक्टली लेकिन 2 minutes पूरे नहीं कर पाते, क्यू कार्ड ख़त्म कर देते हैं 1 minute में या 1.5 minute में. So in that case you can lose the bands. So always just try to speak at least for 2 minutes. इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. Then what is the tip for this? For scoring in this section, make useful notes that help you speak for longer. जब आपको 1 minute मिलता है उसके आप नोट्स ऐसे बना सकते हो कि आपको उसको इलेबोरेट करने में ईजी हो, आप उसको थोड़ा लंबा बोल सको. देन रेफर टू द क्यू कार्ड टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टॉक. जो आपको क्यू कार्ड सपोज आप बोल रहे हो, समटाइम्स आपको कुछ ऑफ ट्रैक या कुछ स्ट्रक्चरिंग आपको नहीं पता चल पाती, आप यू कैन रेफर द क्यू कार्ड. ये नहीं है कि आपने बिल्कुल देखना नहीं है, उसको देख के आप कुछ याद आ सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देन यू कैन स्टार्ट विद दैट. समटाइम्स ऐसा होता है, लेकिन बहुत बड़े स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से रीड कर कर के ऊपर देखते ही नहीं, बोली जाते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्पीकिंग फ्लुएंसी और उसमें आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे. यू कैन जस्ट रेफर, यू कैन जस्ट ग्लांस एट व्हाट यू हैव रिटन और ग्लांस एट द क्यू कार्ड. लेकिन आपने जो बोलना है दैट इज़ कि आपने डायरेक्टली एग्जामिनर को एड्रेस करके बोलना विद आई कॉन्टैक्ट, राइट. And make sure your speech is long enough for minutes but not too long. इतनी भी लंबी नहीं होनी चाहिए कि आप वो 2 मिनट में कोई क्वेश्चन ही मिस कर जाओ. यू हैव टू कवर ऑल दोज बुलेट पॉइंट्स जो उसमें क्यू कार्ड्स में देते हैं, लेकिन वो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि यू शुड फिनिश इट विद इन 2 months. 2 minutes. 2 minutes में उसको सारे आपने बुलेट पॉइंट्स कवर करने हैं. देन इन केस टाइम बचता है तो यू कैन अगेन एलेबोरेट ऑन वन ऑफ दोज बुलेट पॉइंट्स, लेकिन आपने सारे बुलेट पॉइंट्स को कवर करना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट.
अगर आप मिस कर गए, आप ज़्यादा बोलते गए, इन द मीन टाइम्स एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि ओके योर टाइम इज़ अप, तो आपका लास्ट वाला पॉइंट रह जाएगा एंड दैट विल जस्ट रिड्यूस योर बैंड्स. सो ट्राई टू कवर ऑल द बुलेट पॉइंट्स विद इन 2 minutes. फिर थर्ड, डिस्कशन राउंड. डिस्कशन राउंड इज ऑल्सो फॉर 4 to 5 minutes एंड दिस डिस्कशन राउंड इज, ये क्या होता है, इसमें दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट द जनरली रिलेटेड टू द क्यू कार्ड. जो क्यू कार्ड में आपने टॉपिक बोला है उससे रिलेटेड होता है ये. एंड इन दिस दे आस्क यू सम क्वेश्चंस वेयर दे रिक्वायर यू टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, या कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस को बताती हैं, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को. द कन्वर्सेशन कुड बी बेस्ड ऑन एनी ऑफ द टॉपिक एंड you need to express with some real life experiences to look unique and more genuine. कुछ आप examples use कर सकते हो उसमें बोलने के लिए, because आपकी जो answers होंगे वो unique होने चाहिए, memorized answers नहीं होने चाहिए, right? So this is for 4 to 5 minutes again. Then tips for this section are that make sure you know the relevant information about the topic. रेलेवेंट मीन जो टॉपिक आपसे पूछा जाए उसके रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इन केस नहीं भी है, जस्ट डोंट गो ऑफ ट्रैक. थोड़ा सा जो कोशिश करके उसके रेलेवेंट, उसके रिलेटेड जो बोल सकते हो बोलो, बट डोंट गो ऑफ ट्रैक. या डायरेक्टली ये मत बोलो कि मुझे नहीं आता. दैट वुड बी रॉन्ग. आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. यू कैन यूज दोज वर्ड्स कि आई एम नॉट अवेयर, बट स्टिल यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट? Support and extend your answers to look confident. Support and extend. Answers को लंबा करो, support करो with examples to look more confident. Confidence के साथ अगर बोलोगे तो definitely you will get higher bands. Rephrase the question to understand what the examiner is expecting. मान लो examiner ने कुछ पूछा आपको and you didn't understand what the examiner is telling. What you can do is रीफ्रेज द क्वेश्चन, पैराफ्रेज. जैसे हम टास्क 2 में पैराफ्रेज करते हैं ना अपने राइटिंग्स में, हम उनको अपने वर्ड्स में, यू कैन यूज़ द सेम टेक्निक हियर ऑल्सो. उनके जो क्वेश्चन एग्जामिनर के होते हैं उसको यू कैन रीफ्रेज देम एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग, राइट? सो दीज वर अबाउट द फर्स्ट टिप, दैट वॉज बी अवेयर ऑफ टाइमिंग एंड स्कोरिंग. अब वी कम टू द नेक्स्ट टिप. The second tip is fluency versus vocabulary. बहुत से लोग इस चीज़ में confused हैं. Mainly IELTS aspirants always get confused to maintain consistency between fluency and vocabulary. They want vocabulary also and at the same time they want fluency also. Sometimes they are very much confused in this. Both of these skills carry the same weightage in the scorecard. सेम वेटेज, फ्लुएंसी की भी 25% वेटेज है एंड वोकेबलरी की भी 25% वेटेज है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दीज टू थिंग्स. दोनों की वेटेज उतनी ही है बट यू शुड फोकस ऑन बोथ द थिंग्स. बट इट इज़ जनरली एडवाइजेबल टू बी फ्लुएंट देन स्पेंडिंग योर टाइम थिंकिंग अबाउट द बेस्ट वर्ड. जस्ट वोकेबलरी के चक्कर में, सोचने के चक्कर में डोंट क्रिएट पॉजेस. एटलीस्ट फ्लुएंसी तो बना के रखो ना. इन केस यू डोंट नो, कोई वर्ड आपको नहीं याद आ रहा, डजेंट मैटर, जो याद आ रहा वही बोलो. जो सिंपल से सिंपल बोल सकते हो बोलो, लेकिन फ्लुएंसी को मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर वोकेबलरी में इन केस यू आर नॉट गेटिंग हायर बैंड्स, यू कैन एटलीस्ट स्कोर इन द फ्लुएंसी. सो मेंटेन दैट फ्लुएंसी. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, डोंट पॉज, यूज योर फ्लुएंसी, यूज to be like, don't pause, speak fluently, use your time very effectively. कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती, you can just buy some time, कुछ ऐसे आप fillers use कर सकते हो just to cover up that time. Because if you are speaking fluently, it will create a good impression on the examiner and you can just search for 2 or 3 unique words while you speak. आपको हर एक difficult और unique word search करने की ज़रूरत नहीं है. You can just search for only 2 or 3 unique words and that will be more than sufficient.
दैट विल बी सफिशिएंट इन द स्पीकिंग मॉड्यूल. बस उससे आपको बैंड्स आ सकते हैं. जस्ट ओनली थिंग इज दैट मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी and don't take long pauses for thinking new words, because pauses are allowed, but these pauses should be for just 4 to 5 seconds. अगर उससे long pauses होते हैं तो that will be considered as long pauses and that can affect your fluency as well. So words याद करने के चक्कर में अपने fluency के bands भी मत गवाओ. This is my advice to all of the people. Right? Now, what is the third tip that I'd like to give? Don't speak prepared answers. There are many students, many IELTS aspirants who just learn up the answers. बहुत सारी बुक्स मिलती हैं मार्केट में जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होते हैं. लोग उनको याद करके आ जाते हैं. And when they speak those memorized answers, थोड़ा सा जो एग्जामिनर को समझ में आ ही जाता है कि दिस इज़ मेमोराइज्ड और योर जेन्युइन आंसर. Because many IELTS aspirants mainly try to memorize the answers as you do in your school or college में रट्टा मारा और बोल दिया स्कूल कॉलेजेस में जैसे बोलते थे. But it will not help you here because यहाँ पे questions can have different possibilities. आपने मेमोराइज कोई आंसर बोल भी दिया, द एग्जामिनर कैन आस्क यू वाई, हाउ, वेयर, सच क्वेश्चंस जो फिर आपको नहीं आएंगे. इट्स बेटर कि स्पीक ओनली दोज जेन्युइन आंसर वो यू फील. एक्चुअल में जो आपकी फीलिंग्स हैं वही एक्सप्रेस करो. एंड इफ द एग्जामिनर आस्क्स यू सम दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, कोई अनअवेयर टॉपिक पे क्यू कार्ड आ गया या कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, तो देन यू वोंट बी एबल टू आंसर इट. ऑलवेज स्पीक समथिंग दैट डिटर्मिन्स योर स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनिटी मीन्स उसी टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको पता होना चाहिए फटाफट से आंसर आपने कैसे देना है. तो दैट इज़ स्पीकिंग. स्पीकिंग में बैंड्स उसी को मिलते हैं जो वहाँ पे जस्ट स्पॉन्टेनियसली आंसर दे पाता है एंड करेक्टली. इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू स्पीक प्रिपेयर्ड आंसर्स. बहुत सारी बुक्स मैंने देख मार्केट में, आप सब लोगों को भी पता है कि क्यों. सो दिस इन टर्न विल अफेक्ट योर स्कोर्स एडवर्सली. दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग कि उससे आपके स्कोर्स को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट मिलेगा. Don't memorize your answers. Speak spontaneously as required. Right? Fourth tip is avoid speaking in monotone. Monotone होता है कि एक ही टोन में बोलते जा रहे हो, slow, 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 slow. That should not be. Use your expressions while speaking. Be natural when you speak to keep the listener engaged. Listener को engaged रखने के लिए natural बोलो और कीप अ डिफरेंस ऑफ योर टोन. कोई चीज़ में आपने एक्सप्रेशंस अपने उस तरह से बोलने हैं, किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना है, किसी चीज़ पे नहीं देना है. यूज़ योर स्पीच इन दैट वे इफेक्टिवली. वेरी योर पिच एट स्पेसिफिक पॉइंट्स सो जस्ट टू साउंड मोर फ्लुएंट एंड इंटरेस्टिंग. मोनोटोनस स्पीच कैन साउंड लेस फ्लुएंट. जैसे अगर आप मोनोटोनस एक ही स्पीड में बोलते जा रहे हो कि I know, I learned this from there, I got this book from here and I learned this. That is a monotonous. Instead, you can say that I got this topic from this, yeah, my favorite book was so and so. I really liked it. Use your expressions, use your features like facial expressions also while saying something. Don't be monotonous. एक ही लाइन में एक ही उसमें मत बोलते जाओ. Then the last and the important point is don't panic when you make a mistake. Sometimes बोलते टाइम पे हमें कोई मिस्टेक हम कंडक्ट कर देते हैं, हो जाता है. We are human beings and we are prone to mistakes. It's completely fine. अगर आपने मिस्टेक कर भी दी, डोंट पैनिक. डर के हाई ये हो गया वो हो गया एंड स्टार्ट हेजिटेटिंग और रिपीटिंग दोज वर्ड्स और just stammering. Some people start stammering at that time. Don't do that. That will affect your bands very adversely. So in case आपने mistake कर भी ली है, doesn't matter. If you can correct it, अगर if you realize that you made the mistake, you can correct it. उससे क्या हुआ, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि you know the correct thing also, but that mistake was just unaware. आपको mistake
हो गई है, that was not something deliberately. So mistakes tend to happen if you are talking too quickly or you utter a wrong word accidentally. Sometimes हम बहुत जल्दी बोलते हैं, उस टाइम पे हमारी mistakes हो जाती हैं, or sometimes we accidentally we speak something wrong. It happens. So don't panic if such a situation occurs. अगर हो भी जाता है, doesn't matter, just correct your mistake if you realize it, because then examiner will also come to know that you know the correct answer, and it will only fetch you higher bands. वो आपके bands कम नहीं होंगे लेकिन higher bands मिलेंगे उसमें. And if you are quick to correct your mistake, go for it. What I told you कि if you are quick, फटाफट से आप ठीक कर लेते हो mistake को, go for it. This will indicate that you are conscious of what you are speaking. But if you don't know how to correct your mistake, just don't worry, just move on. अगर in case आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपने वो mistake को correct कैसे करना है, don't stop. Just keep on moving. आगे जो आपको बोलना है आप उसको बोलो. Don't just start thinking of that mistake and create pauses और अपनी fluency को affect करो या other speaking parameters को affect करो. मिस्टेक हो गई या कोई बात नहीं, होती रहती है मिस्टेक्स, बट मूव फॉरवर्ड, उसको छोड़ो, आगे चलो, राइट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, दीज वर अ फ्यू टिप्स. अब इसके अलावा आई कैन गिव यू सम लास्ट मिनट आइल्स स्पीकिंग strategies which you can use if you are speaking. Like when you don't understand something, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बी ऑनेस्ट टू रिस्पॉन्ड. यू कैन से जस्ट आई एम सॉरी बट कुड यू प्लीज इलेबोरेट ऑन व्हाट यू मीन. आप एग्जामिनर को पूछ सकते हो इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ये नहीं है कि आप गलत आंसर दो, राइट. सो रादर देन आंसरिंग द रॉन्ग आंसर, जस्ट आस्क वेरी जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली फ्रॉम द एग्जामिनर दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू इलेबोरेट ऑन व्हाट यू मीन. उससे आपका इफेक्ट, आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पर. देन ट्राई टू यूज एडवांस वोकेबलरी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. डोंट यूज द सेम वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस. अगर आपको वोकेबलरी पता है, इट्स ओके, यूज एडवांस वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट यू डोंट यूज द सेम वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में बार बार से सेम वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज मत करो. Give a variety of your words. Take care of your grammar used in the question. If the examiner asks you, ये बहुत important tip है, how was your experience? Your answer should be it was good and not it is good. बहुत जो students है ये mistake करते हैं. Examiner ने क्या पूछा कि how was your experience about the past, and जब past का question पूछा है तो answer भी past में होना चाहिए. It should be it was good and not it is good, not in the present tense. Always make sure of this, right? So friends, this was all about the strategies. Hope you liked this session and please do give me the feedback. आपको अगर अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, whatever, please give me the feedback. And before I finish off this class, I'll just like to introduce again myself. I am Navpreet Kaur. I'm an IELTS trainer and I have a total work experience of 20 plus years in the corporate sector, but I have been teaching IELTS offline to hundreds of students and I've been into this line for the last 3 years. My qualification is MBA and I have myself scored 7.5 bands in the IELTS examinations. So I joined Unacademy as an educator of IELTS. And my referral code here is NCOR, which is the short form of my name, Navpreet Kaur. At the same time, I have a Telegram channel with the name IELTS with NCOR. You can note down this Telegram channel. Telegram app download करो और उसमें आप ये Telegram channel को search करो and you can send me any of the messages or you can contact me directly using this Telegram channel. कुछ आपने अपनी फीडबैक कुछ देना है या कुछ आपको चाहिए या कुछ डाउट्स क्लियर करनी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एट दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो सर्च मी माई प्रोफाइल ऑन द लिंक गिवन हियर विच इज़ हियर. You can use this and you can search my profile.
And at the same time, this is my upcoming course which would be starting just in half an hour from now. That is a course on strategy for attempting task 2 questions. So if you want to learn task 2 questions, please subscribe now and use my referral code NCOR and get a discount of 10% on your course fee. Right, friends? So this was all in today's lesson. Hope to see you in my upcoming lessons. Thank you for being with me.